Bhakti Vedanta Swami Nityanamine Namo Krishna Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharine Nirvishesha Sunyavadi Paskacharya Satarine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharine Nirvishesha Sunyavadi Paskacharya Satarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Sripasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Sripasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Sripasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama
Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaura Haribo, Haribo, Nitai Gaura Haribo. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Om Jnana Timirandasya Chananjana Shalakan Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manupastam Stapitam Yena Bhutan Swam Rupakadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Yuda Padkamnam Shri Gom Vaishnavam Sham Shri Rupam Sagajatam Sakana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Sablutam Pajana Saitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Saganalita Shivishakam Vitam Shah. He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jatpati Kopesha Kopka Kantarada Kanta Namastate Tapta Kanchana Gauraki Radhe Vrindavaneshwe Vishabhana Sutadevi Panamama Haripriya Vankha Kalptobhisha Kripa Sinvaibhisha Patnam Pavadabhyo Vaishnavyo Namo Namah. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Jai Advaita Gadadha Shivasati Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare.
Namo Vishnu Padaya Krishna Vistaya Bhutale Srimad Bhakti Vedanta Swami Namne Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharani Nirvishesha Sunyavadi Paskachaya Desatarani Srila Prabhupada Ki. So last time we discussed how to go from bhajana kriya to anartha nivritti. तो पिछली बार हमने चर्चा की थी कि भजन क्रिया से अनर्थ निवृत्ति तक कैसे जाया जाए. So bhajana kriya had two subdivisions, anishtita bhajana kriya and nishtita bhajana kriya, unstudy and study devotion, practice of devotional service. तो भजन क्रिया के दो उपविभाग हैं, अनिश्चित भजन क्रिया और निश्चित भजन क्रिया. So the anishtita bhajana kriya, we discussed 6 stages. अनिश्चित भजन क्रिया के 6 स्टेजेस हैं, उसके बारे में चर्चा की थी हमने. Utsamaiga natarala vyudavikalpa visaya sangara nitya maksham tarangarangini. So we discussed all these 6 stages. तो ये जो स्टेजेस हैं, उत्साहमयी घनतरला व्यूढ़विकल्पा विषय संगा नियमाक्षर तरंगरंगिनी, इनकी हमने चर्चा की. So if we surpass these stages, then our devotional service becomes steady, nishtita. यदि हम इन अवस्थाओं से गुजर जाएंगे, इनको पास कर देंगे, तो हमारी भक्ति निश्चित भजन क्रिया की स्थिति में जाएगी. But then we must give up our anarthas. लेकिन उसके बाद हमारे अनर्थों से हमको मुक्त होना जरूरी है. That to give up our anarthas, we must give up our offenses. अनर्थों से मुक्त होना है, उनसे छूटना है, तो हमें अपराधों को छोड़ना पड़ेगा. अपराध. So, although our devotional service may be nishtita, steady, it does not mean that we are yet in the stage of anartha nivritti. तो यदि हम निश्चित भजन क्रिया के स्तर पे आए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अनर्थ निवृत्ति हो गई. But first, how to come to that stage of anartha nivritti we will discuss now further today. तो पहले कि अनर्थ निवृत्ति के स्तर पे हम आए कैसे, इसके बारे में हम अभी चर्चा करें. So last time we discussed there are 4 kinds of anarthas. कल चर्चा की थी 4 प्रकार के अनर्थ हैं. Anarthas arising from sinful activities. पाप कार्यों से उत्पन्न अनर्थ. Anarthas arising from pious activities. पुण्य कर्मों से उत्पन्न अनर्थ. And anarthas arising from offenses. अपराधों से उत्पन्न अनर्थ. And anarthas arising from imperfectly performing devotional service. और भक्ति में सेवा को सही तरीके से न करने से उत्पन्न अनर्थ. We discussed last time that the anarthas from sinful activities are these 5 forms of avidya that we discussed before. तो हमने चर्चा की थी कि जो पाप में कारण से उत्पन्न अनर्थ जो हैं, ये अविद्या के जो 5 रूप जो है, अविद्या. So avidya, ignorance of our real self and ignorance of who Krishna is. अविद्या मतलब हमारे स्वयं की पहचान के बारे में अज्ञान और कृष्ण के बारे में भी अज्ञान. And therefore asmita, we accept a false ego, we identify with this body, subtle and gross body. उसके बाद अस्मिता यानी कि मिथ्या अहंकार, हम अपनी पहचान करते हैं सूक्ष्म और स्थूल शरीर से. And therefore we strive, we have material desires and we create attachment to this world and we become averse from what gives pain to the body. मिथ्या अहंकार के कारण भौतिक इच्छाएं आती हैं, जिससे हम भौतिक जगत से आसक्त हो जाते हैं.
तो हमारे अंदर राग उत्पन्न होता है और द्वेष उत्पन्न होता है। And then finally, Abhinivesh, we think we are going to die because the body dies. आखिरकार अभिनिवेश आता है तो उसमें सोचते हैं कि हमारी मृत्यु होगी, क्योंकि शरीर की मृत्यु होती है ना। So, and these are causes, these are the kleshas, we said, the causes of our suffering. और हमने कहा कि ये सब क्लेश हैं, क्योंकि हमारे कष्टों के कारण यही चीजें। And we discussed that even anarthas coming from pious activities, it's a cause of bondage. हमने ये भी चर्चा की कि जो पुण्य कर्म होते हैं उनसे अनर्थ उत्पन्न होते हैं, और ये सभी बंधन के कारण। Because you become addicted to the results of these pious activities, which is enjoyment. क्योंकि आप जो हैं आसक्त हो जाते हैं इन कर्मों के फलों से, पुण्य कर्म के कारण इसे बंध जाते हैं, और इनका फल क्या है? इनका फल है भोग। And you become addicted to bhakti, enjoyment, and mukti, liberation. तो आप भुक्ति और मुक्ति दोनों के आदि हो। It keeps you in the cycle of birth and death. ये आपको जन्म मृत्यु चक्र में फंसाए रखते हैं। And then we spoke about nama parats. उसके बाद चर्चा की हमने नाम अपराध के विषय में। The nama parat, apparats in general, but nama parat is the most serious apparat. अपराध तो साधारण भाषा में अपराध ही है, लेकिन नाम अपराध उनमें भी बहुत ही सबसे गंभीर अपराध है नाम अपराध। And there are 10 offenses against that we made against the holy name. That these are the nama parats. And seva parats, seva parats are the offenses we make in deity worship, in our devotional service. इसके अलावा सेवा अपराध हैं, जैसे विग्रह की सेवा करते हुए अपराध होते हैं या अन्य सेवा करते हुए अपराध होते हैं। But they are not so serious. By constant performance of devotional service, the anarthas cannot grow. वो इतने गंभीर अनर्थ नहीं है। यदि भक्ति में सेवा का हम अच्छे से अभ्यास करेंगे निरंतर, तो वो सेवा अपराध से मुक्त हो जाएंगे। We discussed also what are anarthas according to the Harinam Chintamanam. We also discussed what anarthas are according to Harinam Chintamani. Harinam Chintamani के अनुसार हमने ये भी चर्चा की कि अनर्थ वास्तव में क्या होते हैं। And Haridas Thakur says there are 3 kinds to Lord Chaitanya. हरिदास ठाकुर ने बताया कि 3 प्रकार के अनर्थ बताया चैतन्य महाप्रभु को। Asatrishti. असतृष्णा। One asatrishna means that one becomes attached to things in this world because one wants to enjoy them. असतृष्णा का अर्थ है कि व्यक्ति इस भौतिक जगत वस्तुओं से आसक्त हो जाते हैं क्योंकि उनका भोग करने की इच्छा है। Or one becomes attached to karma kanda and wants heavenly pleasures in the next life. और या फिर कोई कर्म कांड से आसक्त है क्योंकि अगले जन्म में वो स्वर्गीय सुख भोगना चाहते हैं। Or yogis may have a desire for mystic yogic powers. या फिर योगी जो हैं वो योग सिद्धि की उनको इच्छा है। Or one wants to become one with Brahman. या फिर कोई ब्रह्म में विलीन होना चाहते हैं। So these are asatrishna, but then you have hridaya daurbalyam, miserliness of heart. कृष्णा के बाद है हृदय दौर्बल्य, हृदय की कृपणता। That enviousness towards others. दूसरों के प्रति ईर्ष्या भाव। Longing for position and fame. पद सम्मान के लिए लालसा। One gets into the seat to attain something. या फिर कपटतापूर्ण तरीके से आचरण करते हैं कुछ प्राप्त करने के लिए। That
And then there are the apparats. उसके बाद है तीसरा अपराध, जहाँ से अनर्थ उत्पन्न होते हैं. So the first kind is offenses to the holy name. तो पहले है हरिनाम में प्रति होने वाले अपराध. The second is offenses to our service for Krishna in deity worship and other service called seva aparat. दूसरा अपराध है सेवा अपराध, विग्रह सेवा में या कृष्ण के अन्य सेवा में होने वाले अपराध. Then aparat, offenses towards devotees, to devotees who are dedicated their lives for the preaching for the holy name, to the spiritual master, to devotees. तीसरा अपराध है वैष्णव अपराध, या वो भक्तों के प्रति हो या गुरु के प्रति हो, जिन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया है, भक्तों के प्रति अपराध. And offenses to the whole, to other living entities. चौथा है अन्य जीवों के प्रति कोई अपराध. Now, Haridas Thakur said Namabhas. Namabhas will reflection of the holy name. And Namabhas will start to destroy these anarthas. हरिदास ठाकुर ने कहा कि नाम आवास है, यानी कि हरिनाम की जो परछाई है, नाम आवास, वो है अनर्थों को नष्ट करना शुरू कर देगा. That and the first of Namabhas we discussed last time, that is that one chants the holy name unintentionally. नाम आवास के विषय में हमने कल जो पहला नाम आवास वो चर्चा की थी कि जब कोई अनजाने में ही भगवान का नाम लेते हैं. And we discussed 5 kinds of this unintentional chanting of the holy name. और इसके 5 प्रकार बताए थे कि जाने अनजाने में ही भगवान का नाम ले लिया. Sanketa, Parihas, Stoba and Hela. संकेता, परिहास, Stoba and और हेला. So Sanketa is like a Jamil. He was calling out Narayan, his son. He was intended to call his son because he was dying. तो संकेत का उदाहरण है अजामिल, जैसे वो नारायण को बुला रहे थे, वास्तव में पुत्र को बुला रहे थे, क्योंकि वो उस समय मृत्युशैया पे थे, तो लेकिन नारायण का नाम ले रहे थे. And then we have heard about the Yavan who was hurt, injured by the tusk of a boar in his abdomen, and he was dying and he was calling Haram, Haram, abominable. दूसरा हमने यवन का उदाहरण देखा था कि सूअर के माध्यम से जो चोट लग गई थी पेट में, तो वो जब मर रहा था तो हराम हराम इस तरह चिल्ला रहा है. That was unintentionally a name of the Lord, because the syllables formed the name of the Lord. Hara, Ram. तो ये जो नाम है ये जाने अनजाने में लिया हुआ ही है भगवान का नाम, क्योंकि जो शब्दों का संयोग है वो ऐसा बन गया कि वो भगवान का नाम बन गया. जैसे हर राम में क्या है, राम. And then Parihasa, jokingly, Jarasandha was calling Krishna's name jokingly. इसमें आता है परिहास, जिसका अर्थ है कि मजाक मजाक में, जिस तरह जरासंध भगवान का नाम मजाक में लेते थे. So, Stoba or derision, trying to put Krishna down, that was Shishupal. Stoba. Or derision. Or derision. Derision means trying to bring down. तो जैसे शिशुपाल था वो हमेशा भगवान को नीचे लाने का प्रयास करता था. So Shishupal was very envious of Krishna. शिशुपाल भगवान के प्रति बहुत ईर्ष्यालु था. So it's chanting of the holy name in disregard. It's chanting without attention, but still it brings benefit. तो ये एक तरह से उपेक्षा भाव में
या बिना ध्यान के किया हुआ भगवान का नाम तो पुकारना है, लेकिन इसका भी फायदा है। All these mlechas, the lower class people, they attained liberation just by namabas. इस मलेशिया या निम्न श्रेणी के जो लोग हैं, ये सभी नाम आवास के माध्यम से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। But Haridas Thakur said this is the lower border of namabas. लेकिन हरिदास ठाकुर ने कहा कि ये नामावास की निचली परत है। One who has faith in Krishna and then chant the holy name, that is Shraddha namabas. यदि शिव को कृष्ण के नाम में श्रद्धा है, कृष्ण श्रद्धा, फिर वो हरि नाम जप करते हैं, तो वही श्रद्धा नामावास उसके ऊपर का स्तर है, नीचे। And what is the result of namabas, chanting namabas with faith? और नामावास के स्तर में हम श्रद्धा के साथ जब नाम करते हैं तो उसको क्या फायदा है? The holy name becomes like Chintamani, fulfills all your desires. हरिनाम चिंतामणि की तरह हो जाता है, सारी इच्छाएं पूरी कर देंगे आप। One can get everything by chanting namabas with faith, only except Krishna Prema. नामावास के सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं हरिनाम करने से, केवल एक ही प्राप्त नहीं होगी, कृष्ण प्रेम। But if one chants Shraddha namabas, quickly these anarthas will start to disappear. लेकिन यदि कोई श्रद्धा नामावास के स्तर पर आ जाते हैं, तो अनर्थ जो है जल्दी जल्दी दूर हो जाएंगे, एकदम गायब हो जाएंगे। Although this Shraddha namabas cannot give Krishna Prema, हालांकि ये श्रद्धा नाम कृष्ण प्रेम नहीं दे सकते हैं। it will purify your heart and bring you to the stage of Sudanam. ये आपको शुद्ध कर, हृदय को शुद्ध कराएंगे, शुद्ध नाम के स्तर पर लाएंगे। By following the sadhana as explained by the spiritual master, one gets to Sudanam and then one gets love of God. अध्यात्म गुरुदेव के बताए अनुसार जब हम साधना को सही से पालन करते हैं, तो व्यक्ति शुद्ध नाम के स्तर पर आएगा, शुद्ध नाम फिर कृष्ण प्रेम के स्तर। So, but he said this Abbas means a faint light, a weak light. तो कहा गया है कि आवाज का अर्थ क्या है कि मंद मंद प्रकाश जैसे होता है। It's like a shadow, an indirect image. परछाई की तरह है, अप्रत्यक्ष मतलब व्यक्ति नहीं, परछाई भी। So it's like reflected light. तो जिस तरह से परछाई की प्रकाश है वो है इस तरह। So Haridas Thakur says you have two kinds of this namabas. One is reflected light and one is obstructed light. हरिदास तक बताते हैं कि दो तरह के नाम आवाज हैं, छाया और प्रतिबिंब। छाया नाम आवाज, प्रतिबिंब नाम आवाज। That. So if one has partial faith, then this dim namabas, this reflected light comes. तो यदि किसी के अंदर आंशिक श्रद्धा है, रिफ्लेक्टेड मतलब क्या है? प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब नाम आवाज के स्तर में आते हैं। So श्रद्धा क्या है? कम। So this reflected or this dim namabas will finally develop into the pure name and love of God. तो ये जो है प्रतिबिंब नाम आवाज है, धीरे धीरे शुद्ध नाम के स्तर पे आएंगे और यही कृष्ण प्रेम देंगे। That's actual namabas. There is this, at least this partial faith. ये भी नाम आवाज है, आंशिक श्रद्धा है, लेकिन भगवान नाम में। So it's just like clouds. If you have clouds, the full potency of the sunlight doesn't come through. एक बादलों की तरह है, जैसे बादल यदि रहेंगे, सूर्य का प्रकाश का पूरी तरह हम पे नहीं आ पाएगा। So like these anarthas, they're forming a cloud around our heart, and the mist of ignorance, and only
a light fade of the name enters. Faint light of the name enters. तो ये जो बादल हैं हमारे सामने आते हैं और सूर्य को ढक देते हैं, और जो प्रतिबिंब नाम आभास है उस पर किरण ही जो है आ पाते हैं, और ज्ञान के बादलों द्वारा हम फैल जाते हैं. So that's reflected light, but then you have the obstructed light, or so Haridas calls it distorted faith. One can chant, we said before, one can chant with partial faith, but one can chant with distorted faith. Distorted means, it's the faith is incorrect. तो पहले चर्चा की थी प्रतिबिंब नाम आभास या रिफ्लेक्टेड लाइट, है ना, जिसमें दूसरा हरदस को बताते हैं कि छाया नाम आभास, जिसमें व्यक्ति का जो है गलत विश्वास के साथ हरिनाम कर रहे हैं, गलत विश्वास के साथ, सही धारणा नहीं है. So if partial faith means one understands I'm a servant of Krishna. आंशिक श्रद्धा है मतलब क्या है कि कम से कम समझते तो हैं हम कृष्ण के दास हैं. But in distorted faith, लेकिन जब विश्वास ही गलत स्तर में चल रहा है, then they may have some faith in Krishna. तो हो सकता है उनका फिर कृष्ण में कुछ श्रद्धा हो. But these people run after the fulfillment of their material desires, and they want enjoyment. लेकिन ये लोग जो विश्वास इनका गलत स्तर में है, वो भौतिक भोग के पीछे ही दौड़ते हैं, और भौतिक भोग की इच्छा उनके अंदर रहती है. Or one wants liberation. या फिर वो मुक्ति की इच्छा है, मुक्ति की नहीं है. So if one chants with that faith, Haridas Thakur said, तो ऐसा ने कहा कि यदि कोई इस विश्वास के साथ जप करता है, we will not really make progress to purification of the heart. It will not happen. तो कौन सा विश्वास? गलत विश्वास. तो हृदय में शुद्धिकरण की अवस्था में वो नहीं आए, हृदय शुद्ध नहीं होगा. So it's important to see in our heart what are our desires, what are our expectations. तो हमें हृदय में जांच करना जरूरी है कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हम क्या आशा करते हैं, भक्ति करते हुए क्या चाहते हैं. Our expectation should be to please Krishna. हमारी इच्छा, हमारी भावना होनी चाहिए कृष्ण को पसंद करना. And just praying to Krishna, let me always serve you, and not asking anything in return. कृष्ण से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि बस आप मुझे सेवा हमेशा लगाए रखें, और कुछ उनकी सेवा करने के बदले कुछ मांगने की आवश्यकता हमें. Because in that distorted faith, a person may think that the holy name, I can use it for my profit to get something out of it. क्योंकि जब गलत विश्वास में हम चलते हैं तो हमारे मन में ये भाव हो सकता है कि मैं हरिनाम कर रहा हूँ या हरिनाम मेरे साथ है, तो हरिनाम से ये आशा करता हूँ, ये मुझे लाभ चाहिए. But that's not the real Namabhas. That's distorted. वो वास्तविक नामाभास नहीं, छाया. If one comes to the real Namabhas, then that all the ignorance and weakness of heart will be cleared from the heart. यदि कोई आ जाए वास्तविक नामाभास के स्तर पे, तो सारा जो अनर्थ है या जो सारी कमजोरियां हैं वो सब दूर हो जाएंगे और हृदय जो है शुद्ध हो जाएगा. But if one chants the holy name in this distorted Namabhas, यदि कोई ये जो गलत धारणा है उस स्तर पे नामाभास जप करता है, which is born from cheating knowledge, जिसका मूल क्या है? कपटता पूर्ण ज्ञान. it will increase your offenses. इससे आपके अपराध और बढ़ते चले जाएंगे. It's not chanting the holy name. ये तो हरिनाम का जप है ही नहीं. It's Namaparad. ये नाम अपराध है. That
And if we look at the 10 offenses, we see that this is there. यदि आप 10 नाम देखेंगे तो उसमें एक नाम ये भी है, chanting the holy name and trying to get rid, performing sinful activities on the strength of the holy name. Yeah, performing, just seeing the Hare Krishna chanting as a karma kanda process. या फिर 8वां अपराध है हरिनाम कीर्तन को वेदन वर्णिते शुभ कर्म. So that increases our aparat. इससे अपराध और हमारे बढ़ते चले जाते हैं. There's also Mayavadis who think they chant Hare Krishna to become one with Brahman and to become Krishna. भक्ति वाले हैं, इस तरह मायावादी भी हैं जो हरे कृष्ण कीर्तन से बात करें, लेकिन उनका इच्छा क्या है, कृष्ण के साथ एक होने का प्रयास करते हैं, ब्रह्म में विलीन होना चाहते हैं. So it says that Haridas Thakur said these are the greatest offenders. तो हरिदास ने कहा कि ये सबसे बड़ा अपराध है. The potency of the holy name will not be there. हरिनाम की शक्ति वहाँ पे रहेगी नहीं. So one must give up these two witches that Rupa Swami mentioned, Bhakti and Mukti. तो शुरू को उसने बताया कि हमें दो पिशाचियों से मुक्त होना है. तो क्या है, भक्ति और मुक्ति. And one should see oneself as a servant of Krishna. और खुद को कृष्ण के दास के रूप में पहचानना है, देखना है. And feel repentant. और पश्चाताप होना चाहिए हमको. Understand we are all nonsense because we are here because we were envious of Krishna. हमें समझना चाहिए कि हम सभी कितने मूर्ख हैं और हम यहाँ क्यों हैं, क्योंकि हम कृष्ण के प्रति ईर्ष्या करते हैं. And be obedient to the spiritual master. और अलग लोगों के प्रति हमें आज्ञाकारी होना चाहिए अभी. And only in that position can one receive the real name of Krishna. और जब ऐसा अनुभव होगा तभी कोई व्यक्ति वास्तव में कृष्ण के वास्तविक नाम को प्राप्त कर सकता है, ग्रहण कर सकता है. Because that's the realization of Sambandha Gyan, our relationship with Krishna. क्योंकि संबंध ज्ञान का यही साक्षात्कार है. संबंध का मतलब जब कृष्ण का संबंध स्थापित होता है वो. Of course, Mayavadis say Krishna and the Jiva, they are both temporary and imaginary. लेकिन मायावादी कहते हैं कि कृष्ण और जीव दोनों ही क्षणिक हैं या दोनों ही काल्पनिक हैं. He is a great offender against the holy name. ये अपराधी हैं हरिनाम के प्रति, महान अपराधी हैं. So this is about the chanting of Namabhas from Harinam Chintamani. तो ये है हरिनाम चिंतामणि से नाम आवास का स्तर क्या है. But now we go back to Madhurya Kadambini. अब हम वापस जाते हैं माधुर्य कदम्बिनी. That so we discussed the anarthas. अनर्थों की तो हमने चर्चा कर ली माधुर्य कदम्बिनी से. And then Haridas Thakur discusses with Lord Chaitanya some of these 10 offenses against the holy name. उसके बाद हरिदास ठाकुर और भगवान श्री महाप्रभु में जो नाम अपराध हैं 10 उनमें कुछ की चर्चा होती है. Which we will discuss a little later. उसके बाद में उनकी चर्चा करेंगे. But now I want to speak about nullification of these anarthas. लेकिन अब हम चर्चा करेंगे कि इन अनर्थों से मुक्त कैसे हुआ जाए. Eradication of the anarthas, that's the purification of the heart. अनर्थों से मुक्ति मतलब हृदय शुद्धि कैसे हो. So we know there were 4 types of anarthas. 4 प्रकार अनर्थ हैं, ये तो हमने चर्चा कर ली. Who remembers them? These अनर्थस
born from sinful activities. Sinful activities. Anarthas comes from pious activities. Pious activities. From offenses. From offenses and from Imperfectly. Bhakti. yeah, This imperfect practice of bhakti. Yeah. So these four. And so Srila Vishwanath Bhakti Thakur discusses each of these anarthas and tells when they will be eradicated. तो श्रीला चक्रवर्ती पाद चर्चा करते हैं और बताते हैं अलग अलग अवस्थाएं जब ये अनर्थ हमसे दूर हो जाएंगे. And he gives different, yeah, he says, he presents for each of the anarthas 5 grades, 5 stages. और हर अनर्थ के लिए 5 ग्रेड या 5 स्टेज बताते हैं हर अनर्थ. The first grade is limited. Only a few anarthas are removed. और फर्स्ट ग्रेड अनर्थ निवृत्ति की अवस्था में उसमें कुछ अनर्थ ही जो है आते हैं जो दूर हो जाते हैं. And then the next grade is pervasive. More anarthas are removed. और अगली ग्रेड में और ज़्यादा विस्तारित हैं और ज़्यादा अनर्थ दूर हो जाते हैं. And then it becomes general, like 80% of the anarthas are gone. उसके बाद सामान्य स्तर लगभग 80% अनर्थ चले जाते हैं. And then complete, like 98 is gone, percent is gone. उसके बाद पूर्ण लगभग 98% अनर्थ चले जाएंगे. And then absolute, then they are gone forever. उसके बाद है एकदम चरम अवस्था जिसमें कि अनर्थ हमेशा हमेशा के लिए चले हैं. So we have limited, pervasive, general, complete and absolute. तो एक है सीमित, एक है विस्तारित और उसके बाद सामान्य, फिर लगभग होगा पूर्ण, उसके बाद चरम अवस्था. That, at first he discusses Namaparat, the most serious. पहले चर्चा करेंगे नाम अपराध की जो सबसे गंभीर अपराध है. The problem with Namaparat is that it cannot be counteracted by anything. समस्या क्या है नाम अपराध के साथ? किसी और तरीके से आप इनसे मुक्त नहीं हो सकते. That the Namaparat, Haridas Thakur said, the only thing you can do is constantly chant holy names. ऐसा सागुर कहते हैं कि नाम अपराध से मुक्त होना है तो क्या करना चाहिए? निरंतर हरिनाम का ही जप करते रहिए. Because if one performs Namaparat, the mercy of the holy name is not going to manifest. क्योंकि नाम अपराध ही करते रहेंगे तो हरिनाम की कृपा प्रकट ही नहीं होगी. That so of course after some time chanting, a long time, one can come over it, but it's difficult. Okay. One can come over the Namaparat if one chants for a long time. यदि लंबे समय तक हरिनाम जप करेंगे तो निश्चित रूप से हम नाम अपराध की अवस्था को पार कर सकते हैं. That कठिन है, समय बहुत है. therefore Namaparat is the most serious one. इसलिए नाम अपराध जो है सबसे गंभीर अपराध. Sevaparat, if one does it not intentionally, then it's removed very quickly. But just by performance of devotional service, by chanting. सेवा अपराध की बात करें तो यदि हम जानबूझकर सेवा अपराध नहीं करते हैं तो भक्ति करते करते सेवा अपराध अपने आप ही दूर हो जाएंगे. जैसे हरिनाम का कीर्तन करने से ज़्यादा समय उसमें नहीं लगेगा यदि जानबूझकर न किया गया तो. So when one performs bhajana kriya, or and it becomes nishtita, उसके बाद हम भजन क्रिया का अभ्यास करते हैं और निश्चित भजन क्रिया के स्तर पे आ जाते हैं फिर करते करते. then the anarthas from Namaparat
are removed limitedly, only a few. उस स्तर पे नाम अपराध के जो अनर्थ हैं वो बहुत ही कम मात्रा में दूर होते हैं, बहुत सीमित मात्रा में, लिमिटेड, सीमित. Yeah, but then when one continues to chant, लेकिन यदि भक्त आगे हरिनाम करना जारी रखते हैं, that and one comes to nishtha, liberation, उसके बाद वो निष्ठा के स्तर पे आ जाते हैं, जारी रखेंगे तो जिसे कहते हैं मुक्ति का स्तर. So the eradication of the anarthas is pervasive. Many anarthas are removed. उस समय अनर्थ निवृत्ति की जो अवस्था में बहुत सारे अनर्थ विस्तारित जो दूसरी अवस्था है 5 ग्रेड में से उस बहुत सारे अनर्थ दूर हो जाते हैं निष्ठा के स्तर पर. Anarthas coming from nama parat we speak here. विशेष रूप से कौन से अनर्थ की बात कर रहे हैं हम? जो नाम अपराध से उत्पन्न अनर्थ है वो अनर्थ की बात है. The most heavy. जो कि सबसे भारी है. That if one goes from nishtha to ruchi or bhava, up to bhava, निष्ठा के बाद रुचि, आसक्ति और भाव के स्तर तक हम जाता है जब भक्त, then the eradication of the anarthas from nama parat is general. तो नाम अपराध से जो अनर्थ है उनका जो निवृत्ति है वो जनरल लेवल मतलब सामान्य स्तर तीसरी ग्रेड पे आ जाते हैं, चले जाते हैं, काफी चले जाते हैं. That like 80% gone. 80% चले जाते हैं. Yeah, and if one continues, then says here, general, with Prema it's complete. और फिर जब प्रेम के स्तर पे जब आ जाते हैं तब पूर्ण 98% बताया था अनर्थ चले जाते हैं. 98%. And when one goes back to Krishna, attains the lotus feet of Krishna, it's absolute. और उसके बाद जब कृष्ण के पास जाए, कृष्ण के चरण को प्राप्त कर लेते हैं तब एब्सोल्यूट, फिफ्थ ग्रेड, सारे अनर्थ दूर. These are the most heavy ones. These are the most heavy anarthas. ये सबसे भारी अनर्थ हैं नाम अपराध वाले. We will also speak about the eradication of the anarthas coming from sinful activities. हम ये भी चर्चा करेंगे कि जो पापमय कार्य हैं उनसे अनर्थ कैसे दूर होंगे. We will come to that soon. But this nama parat is the most heavy anartha. लेकिन नाम अपराध जो हैं सबसे भारी अनर्थ. That we discuss anarthas. Among anarthas, 4 types. Yeah. Born from sinful, then born from pious activities, then born from offenses, and then born from impulsive. So, yeah. Born from offenses, there are 4: Seva, Nama, Vaishnava, and one more. Yeah. So we discussed nama parat. Now we discuss Nama parat. That's what we have discussed till now. Okay. तो महाराज Yeah. तो जैसे हमने चर्चा किया अनर्थ 4 प्रकार के हैं, है ना. एक तो है पुण्य कर्मों से उत्पन्न, एक है पाप कर्मों से उत्पन्न, एक है अपराध से उत्पन्न, और एक है भक्ति जब गलत तरीके से करते हैं उससे उत्पन्न. तो महाराज चर्चा किए अपराध से उत्पन्न अनर्थ, वो भी 4 प्रकार के हैं. एक है नाम अपराध, एक है सेवा अपराध, एक है वैष्णव बुद्धि अपराध, और एक और है अन्य जीवों के प्रति अपराध. तो उसमें जो नाम अपराध है उस पर चर्चा किया पहले, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारी. So there are a few examples that Haridas Thakur gives here. तो कुछ उदाहरण हैं जो कि हरिदास ठाकुर है ना चिंतामणि में बता रहे हैं. You know, when Chitraketu was laughing, seeing Lord Shiva under the big banyan tree, and Mother Parvati was disturbed and cursed him. हम जानते हैं एक बार चित्रकेतु जो है हंस रहे थे
शिव जी बैठे थे पार्वती माँ के साथ, और पार्वती माँ नाराज हो गए, उन्होंने शाप दे दिया था। कथा आती है भागवत में। It looked like an accidental Mahaparad to Lord Shiva. ऐसा लगा कि महाअपराध कर दिया भगवान शिव के प्रति चित्रकेतु ने, मतलब अचानक नहीं कर दिया, लेकिन कर दिया ऐसा लगा। But it was not a real Mahaparad. लेकिन वास्तव में ये उस तरह अपराध था नहीं। No, because his consciousness of Chitraketu was absorbed in Prema, love for Krishna. क्योंकि चित्रकेतु की चेतना कृष्ण प्रेम में डूबी हुई थी। And Haridas Thakur said, this is proven by the fact that he did not distinguish between his form as an associate of the Lord and as a demon in the form of Vritrasura. Now, so after he was cursed by Parvati, he became Vritrasura, a demon. जब पार्वती माँ के द्वारा चित्रकेतु को शाप दिया गया तो वो वृत्रासुर बन गया, असुर। But he thought never himself to be a demon. लेकिन उन्होंने कभी अपने आप को सोचा नहीं कि मैं असुर हूँ। He saw himself as an associate of the Lord. सोचा कि हम तो भगवान की वात्सल्य हैं, संगी हैं। So he was still in love of God. उस अवस्था में भी कृष्ण प्रेम में ही थे वो। उस अवस्था में। And then you have Jai and Vijay. उसके बाद जय और विजय हैं आपके साथ, जय विजय की बात आती है। That so did they make an offense towards the four Kumaras? क्या उन्होंने अपराध किया चार कुमार के प्रति? No. नहीं। Haridas says it was a manifestation of their personal desire, born from Prema, out of love. सरस्वती ने कहा कि ये जो उनकी व्यक्तिगत इच्छा थी, जो कि प्रेम के कारण थी, उसका एक प्राकट्य था। ये जो बाहर जो रोका था, ये वीर रस का आस्वादन करना जो इच्छा। This is from the Bhagavatam. They pray to the Lord Jai and Vijay, and they say, yes, we know you have a desire to fight to Lord Narayan. तो ये भागवत में आता है, who prayed, जय and विजय। Yeah, Lord Narayan. जैसे जय और विजय ने भगवान नारायण से प्रार्थना की कि वो वीर रस का आस्वादन हम करना चाहते हैं। You have this desire to fight, but in the spiritual world there are no demons to fight with. तो आप युद्ध तो करना चाहते, वीर रस करना चाहते हैं भगवान को, लेकिन आधे जगत में असुर कहाँ हैं जो भगवान से युद्ध करें? And in the material world, all these so-called demons are too weak to fight with you. और भौतिक जगत की बात करें तो आपसे युद्ध करने में तो ये सारे भौतिक जगत के लोग तो कुछ भी नहीं आते हैं। We are strong. We could fight with me, but we are not inimical to you. जय विजय भगवान बोलता है कि हम आपसे युद्ध कर सकते हैं, वीर रस का आस्वादन हो सकता है, लेकिन हम आपके प्रति ईर्ष्या ही नहीं करते हैं अभी। So somewhere or other, make us inimical towards you, and so that we can give you a good fight. तो भगवान से बोले कि किसी न किसी तरह ऐसा आयोजन कीजिए कि हम आपके प्रति ईर्ष्या करने लगे, ताकि आपसे हमारा युद्ध अच्छा हो पाए। That so we are your servants, and we can not tolerate seeing any lack in your perfection. तो हम आपके दास में और आपकी पूर्णता में कोई कमी आए, ये हम नहीं देख सकते। मतलब आपके अंदर हर चीज होनी चाहिए, वीर रस भी होनी चाहिए। So that's interesting. ये है interesting। But now we will speak about anarthas from previous sin. अब चर्चा करेंगे कि पिछले जो पाप कर्म उनसे जो उत्पन्न अनर्थ हैं, उनसे कैसे निवृत्त हुआ जाए। When you come to the stages of anishtita bhajana kriya, you come to bhajana kriya, the eradication is limited. No, sorry. The eradication is already general already. जब हम बात करते हैं पाप कर्मों से अनर्थ की, तो अनिष्ट लिंग जो निष्ठ लिंग के स्तर पे आएंगे, तो वो उतने अनर्थ निवृत्ति सामान्य स्तर और थर्ड ग्रेड का आ जाती है, हो ही जाता है।
And when you go to Anartha Nivritti and you complete Anartha Nivritti and come to the beginning of Nishtha, the eradication is complete. और जब निश्चल भजन क्रिया से अनर्थ निवृत्ति के स्तर में जाएंगे, अनर्थ निवृत्ति कंप्लीट हो जाएगी, निष्ठा के स्तर पे आएंगे, तो जो पाप में कर्म उत्पन्न अनर्थ हैं वो कंप्लीट लेवल तक चले जाते हैं, फोर्थ लेवल. And then when you come to Ashakti, becoming attached to Krishna and seeing him in the heart, then it's absolute, it's all gone. और जब आप आसक्ति के स्तर पे आ जाते हो, तब ये पूरे अनर्थ चले जाते हैं, जो पाप में कर्म उत्पन्न है. So Namabhas is so powerful. नाम आवास में क्या शक्ति है? We have a little faith in the holy name, and all the anarthas of our past activities, our past karma, gone. बस हरिनाम में हमारा श्रद्धा हो, नाम आवास, तो हमारे सारे पाप में कर्मों से जो भी अनर्थ उत्पन्न हो सब चले जाएंगे. But Namabharat is the real problem. मेन समस्या है नाम अपराध. And then there are anarthas from the imperfect practice of bhakti. इसके बाद this what you mentioned is pious and impious. Both activities are done. Well, the pious activities are not mentioned here, but it is in the same category. तो इसके पहले जो बताया कि जो पापमय कर्मों से उत्पन्न अनर्थ हैं या पुण्य कर्मों से उत्पन्न अनर्थ भी हैं, दोनों ही जो है ये निष्ठा के स्तर पे, जो आसक्ति स्तर पे आएंगे सारे चले जाते हैं. और इसके बाद बता रहे हैं कि जब भक्ति को ठीक से नहीं करते हैं, उससे जो अनर्थ उत्पन्न होते हैं, उनसे कैसे मुक्त होना. Then anarth is from imperfect practice of bhakti. ये अनर्थ हैं भक्ति को ठीक से नहीं करने से उत्पन्न. By the performance of bhajana kriya, it's limited. जब भजन क्रिया के स्तर पे आते हैं तो ये अनर्थ लिमिटेड यूज होते हैं, सीमित. By the appearance of nishtha, it's complete. जब निष्ठा आ जाएगी तो कंप्लीट चले जाएंगे, फोर्थ ग्रेड तक. And when we get ruchi, taste for Krishna, when your attraction comes spontaneous, it's absolute. जब रुचि आ जाएगी, स्वतः स्फूर्त आसक्ति आएगी, तो ये सारे अपराध चले जाएंगे, जो भक्ति ठीक से नहीं होगी उससे अपराध. Yeah. Haridas Thakur said, with the utterance of the holy name, all sins, with one utterance of the holy name, all sins are destroyed. हरिदास ठाकुर ने कहा कि एक पवित्र नाम का जप करेंगे, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे. So we will try to understand this statement. तो इस वाक्य को समझने का हम प्रयास करेंगे. जैसे ये, So if one hears the holy name even one time, a Chandala can obtain liberation from the material world. तो यदि कोई पवित्र नाम का एक बार भी श्रवण करता है, कीर्तन करता है, तो चंडाल भी जो है बहुत जगह से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं. So we see in the case of Ajamil, he uttered the holy name once in Namabhas. हम देखते हैं अजामिल का उदाहरण, एक बार नाम लिया, नाम आवास के स्तर में. And all his anarthas coming from avidya, they were removed. और विद्या से उत्पन्न सारे अनर्थ उनके दूर हो गए थे एक बार नाम लेने से. And he attained the lotus feet of the Lord. भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर ली. The question here is this all true? प्रश्न यही क्या सब सही बात है? So Haridas writes, one should have no doubt that the holy name has such inestimable power. किसी को संशय नहीं होना चाहिए तो बिल्कुल क्या हरिनाम के अंदर ये अचिंत्य शक्ति है, जिसको हम कल्पना भी नहीं कर सकते. But now the point comes. But because the holy name is unhappy with offenses committed against the holy name, लेकिन अभी मेन पॉइंट ये है कि जब हरिनाम खुश नहीं है, क्योंकि हरिनाम के प्रति अपराध हो रहे हैं, इसलिए हरिनाम खुश नहीं है उनसे. it does not manifest the complete power to the offender. तो हरिनाम अपराधी के प्रति पूरी शक्ति को प्रकट ही नहीं करते. And that's a problem. यही समस्या है.
that There's another statement. Natiyama pasabritsha tadbatan svapi pashanti. Such a person does not see Yama or his servants carrying noses even in dreams. Yamaraja. ऐसा व्यक्ति जो है जो नाम जप कर रहे हैं वो कभी यमराज का या यमदूत जो हैं जो फंदा लेकर आते हैं उनका दर्शन कभी नहीं करते. So the word yama refers to the rules of yoga practice. यम जो यहाँ बताते हैं कि जो योग सिद्धि है योगाभ्यास है उसमें नियम है उनको भी यम कहा. Yeah, but that's related to another verse. And thus means that for such a person there is no need of other forms of purification. यहाँ पे ये कहा गया है ऐसे व्यक्ति के जो हरिनाम कर रहे हैं सिद्धि या शुद्धिकरण के अन्य उपायों को अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं है. Yeah, and then he explains all this. सबको फिर ये समझाते हैं आगे. So if we become an offender to the holy name by namaparat, we lose the mercy of the name. तो अपराधी हो जाएंगे नाम के प्रति तो हमारी नाम कृपा को हम खो देते हैं. It's like a servant is offensive to his wealthy master. ये ऐसा ही है कि एक सेवक जो है अपने अमीर स्वामी के प्रति अपराधी हो जाए. And because he is offensive, he is denied proper care and is treated indifferently by the master. यदि वो इस तरह करेंगे अपराधी करेंगे तो उसको सही देखभाल नहीं करते हैं और स्वामी उसका अलग तरह से व्यवहार करते हैं. So he lost the mercy of the master. Therefore he suffers poverty and distress. स्वामी की कृपा खो देने के कारण वो गरीबी और परेशानी का सामना करता है उदास. But then, if a person performs sincere service to the spiritual master and the scriptures, इसके यदि कोई व्यक्ति गुरुदेव और शास्त्रों के प्रति निष्पण भाव सेवा करते हैं, the name will again gradually manifest mercy. तो जो हरिनाम है वो अपनी कृपा को प्रकट करेगा. And gradually eliminate his evil tendencies. और उनके जो पाप करने की बुराई करने की प्रवृत्ति है उसको नष्ट कर देगा. So that seems another way that helps to overcome namaparat. तो नामपात से मुक्त होने का एक और तरीका ये भी है जो बताया अभी. Perform sincere service for the spiritual master. आध्यात्मिक गुरुदेव के निष्कपट भाव से सेवा करना. That, yeah. So therefore, mostly all anarthas are gradually removed because we have still this namaparat. तो बात यह है सार में कि जरा अनर्थ जो हैं धीरे-धीरे दूर होते हैं क्योंकि नाम अपराध के अवस्था में हम बने रहते हैं इसलिए. How do I know that I am chanting with namaparat? कैसे पता चलेगा कि नाम अपराध के स्तर पे मैं जप कर रहा हूँ? Haridas Thakur explains. अगर सबको समझा रहे हैं इस बात को. When one's heart is as hard as a stone. जब हृदय पत्थर की तरह कठोर है. When if you chant the holy name of Krishna, और उस समय हरिनाम का कीर्तन करेंगे जब करेंगे, there are no tears in your eyes or standing of hairs on your body out of ecstasy of love of Krishna. कृष्ण प्रेम के आनंद के जो लक्षण हैं जैसे कि रोमांच आ जाना या आंसू बहना ये सब नहीं होगा. Someone has that here. वो है क्या लक्षण आ रहे हैं? You can speak with me afterwards. बाद में मुझसे बात कर सकते We will take shelter at your lotus feet. हैं. ओके शरण लेंगे. And then this is a question. O best of the Brahmins. और फिर ये प्रश्न पूछा जा रहा है. What- ब्राह्मण श्रेष्ठ.
best of the Brahmins, what are the offenses against the holy name of the Lord? We've cancelled the results of all performances. तो पूछ रहे हैं कि हे ब्राह्मण नाम अपराध कौन कौन से हैं जो कि सारे जो विधि हम अभ्यास करते हैं उनके परिणामों को सब कैंसिल कर देते हैं इसे नाम अपराध. So, what are these offenses that prevent us to give the result of repeatedly chanting Hare Krishna mantra? ऐसे क्या अपराध हैं जो कि हम बार-बार निरंतर हरिनाम भी करते हैं उनके फलों को हम मिलने से रोक देते हैं? क्या अपराध हैं ऐसे? So this chanting of the holy name should give us prema. ये हरिनाम का कीर्तन तो प्रेम प्रदान करना चाहिए ना हमको. So this is the effect of nam aparat. तो ये है नाम अपराध का प्रभाव. नाम अपराध का प्रभाव. So one can say, yes, okay, these offenses are so serious that if one commits nam aparat, one loses the mercy of the Lord. The offense, ये जो अपराध हैं क्या ये इतने गंभीर हैं कि उनको करेंगे तो नाम की कृपा को हम खो देंगे? So it's so serious, one loses the mercy of the Lord and cannot even take shelter of the Guru and devotional activities. गुरु की शरण लेंगे, भक्ति में सेवा की शरण लेंगे, तो भी क्या हम कृपा खो देंगे, कृपा नहीं मिलेगी? ये इतना अपराध होंगे तो इतना गंभीर अपराध है कि? So it says this is true. और कहा गया है कि ये सही बात है. It's like a serious fever. ये बहुत गंभीर बुखार की तरह है ये अपराध. When you have a serious fever, you lose all the taste for food. बुखार आ जाता है बहुत तेज तो खाने की प्रति बिल्कुल अरुचि आ जाती है. It becomes impossible to eat. खाना असंभव ही हो जाता है. So if one commits serious offenses, तो यदि कोई इस तरह गंभीर अपराध करेगा, one loses the ability to hear, chant and perform devotional activities. तो भक्ति में सेवा करने के लिए योग्यता या रुचि श्रवण कीर्तन इसमें चली जाएगी बिल्कुल. Still there is hope. फिर भी आशा की किरण है, आशा है तो. However, लेकिन if the fever lessons become less with time, बुखार समय कम होता जा रहा है, some taste for the food develops. तो कुछ रुचि फिर आ जाएगी. So even then, nourishing food like milk and rice cannot give the full power of nourishment in the person. जैसे milk and rice. So if one takes then milk and rice, it cannot give the full power of the full strength of the full power of nourishment to a person who has chronic fever. यदि किसी को लंबे समय से बुखार आ रहा है तो दूध और चावल हम देंगे तो उससे पूरा पोषण उसको नहीं मिल पाएगा. They bestow some benefit but not the full. थोड़ा लाभ तो मिलेगा लेकिन पूरा लाभ उसको नहीं मिल पाएगा, पूरा पोषण नहीं मिल पाएगा. लंबे समय से बुखार है, दूध चावल दोगे. But with a good diet and medicine, one can restore the body gradually to its health condition. लेकिन यदि हम उसको दवा भी दें, अच्छा आहार भी दें, तो व्यक्ति शरीर का स्वास्थ्य सुधार करके पुरानी स्वास्थ्य अवस्था वापस आ सकते हैं. So, and when at that time, the full potency of normal food can be utilized to nourish the body. उस समय जो साधारण भोजन जो नॉर्मल खाते हैं उसको उपयोग कर सकते हैं हम शरीर को पोषण देने के लिए व्यक्ति को. In the same way, after a long time chanting with nam aparat, the effects of the aparat reduces somewhat and the devotee gets a little taste. तो यदि इस तरह लंबे समय तक नाम अपराध करते रहते हैं, लेकिन जब अपराध कम होते हैं तो थोड़ी रुचि आती है. And then the devotee becomes qualified for bhakti. तब भक्ति करने के योग्य बन जाते हैं. So we must repeatedly get our medicinal doses of hearing and chanting
about Krishna from the Bhagavatam and hearing and chanting Krishna's names, तो हमें जो हमारी दवा है उसको रेगुलर डोज देना चाहिए। वो क्या है? श्रवण कीर्तन करना भागवतम से, एक तो भागवत श्रवण कीर्तन और एक हरिनाम का श्रवण, and perform devotional service pleasing the spiritual master. आध्यात्मिक गुरु को प्रसन्न करते हुए भक्ति में सेवा में लगे रहना, जो सेवाएं हैं। And gradually we will get realizations. और निश्चित रूप से हमें फिर साक्षात्कार प्राप्त होगा And we will attain Prema. और प्रेम भी हम प्राप्त करेंगे। So therefore, experienced devotees have described this process in different stages. तो इसलिए अनुभवी भक्तों ने इस विधि को अलग-अलग अवस्थाओं में बताया है। Starting from Shraddha faith, श्रद्धा से शुरू करके followed by association, sadhu sangha, साधु संग, उसके बाद and then bhajana kriya, the practice of devotional service, भक्ति में सेवा का अभ्यास, anarti nivritti, purification of the heart, हृदय का शुद्धिकरण, nishtha, steadiness, निष्ठा यानी दृढ़ता, ruchi, attraction to Krishna, रुचि कृष्ण के प्रति आकर्षण, asakti, realizing Krishna in the heart, आसक्ति मतलब हृदय में कृष्ण का अनुभव, bhava, the preliminary form of love for Krishna, भाव प्रेम का जस्ट पहले का रूप, प्रारंभिक रूप, which if become more condensed becomes prema, love of Krishna. भाव जब और गहरा हो जाता है तो फिर वो कृष्ण प्रेम का स्तर में हो जाता है। Anyway, this is the essence that I wanted to explain today. ये जो आज समझा जाता है उसका सार है। In the beginning, I said this process of Arthanivritti takes very long. शुरू में मैंने कहा ग्रहण की विधि में बड़ा लंबा समय लगता है। And today I have explained why. और आज मैंने समझाया क्यों लगता है। It's not my explanation. मेरा समझा वो नहीं है। It's from Haridas Thakur. मेरा सब वही समझा है। I don't know nothing, but he knows. मैं कुछ नहीं जानता लेकिन वे जानते हैं। Is there any question, comments? प्रश्न है, कोई टिप्पणी है? Yes, Prakash. Thank और जैसे असत तृष्णा के कारण मतलब हमारे अंदर भोग करने कितना अच्छा है, तो हम भगवान को सेवा नहीं कर पाते और फिर हम हमारा जो मार्ग है उससे भटक जाते हैं, तो कैसे इसको कभी भगवान को संतुष्टि के लिए करें? Asat Krishna, it's in Asat Krishna means we have desire to enjoy. Because of desire to enjoy, we are not able to serve Krishna, and we also deviate from our path sometimes. So how should we serve Krishna and become free from this Asat Krishna? Yeah. That is a very good question. बहुत अच्छा प्रश्न पूछ लिया। That it's good if we are honest with our condition of heart, recognize that we have this ashatvista, it's in our heart. अच्छी बात है कि यदि हम ईमानदार हैं, हम हृदय की स्थिति को समझते हैं कि हमारे अंदर असत तृष्णा भरी हुई है। Yes, I would say that when we are always serving Krishna, we have no time for this. You have no time for? For this ashatvista. मैं ये कहूँगा यदि हम हमेशा कृष्णा की सेवा कर रहे हैं, तो असत तृष्णा के लिए हमको समय नहीं मिलेगा। So if we are 24 hours busy in the day with serving Krishna, यदि हम 24 घंटे सेवा में लगे हैं कृष्ण की, व्यस्त हैं उसमें दिन भर, then you forget to think about your material desires. तो आपको भौतिक इच्छा का सोचने का समय नहीं मिलेगा दिन भर। But it will purify your heart. लेकिन इससे आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा। It will gradually remove this. आपको ये इच्छाओं को हटाने में मदद मिलेगी, भौतिक इच्छाओं। But
If you have material desires, and they can be used in Krishna's service. लेकिन यदि आपके अंदर भौतिक इच्छाएं भी हैं और उनको हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, Like you desire to be a gardener. हाँ? You desire to be a gardener, and that's your job. तो मान लीजिए आप इच्छा करते हैं माली बनने की, आपका जो काम है, So, and you are attached to that kind of work, और आप उस तरह के काम से आसक्त भी हैं, माली जो सेवा करते हैं, which is also a form from Asat Trishna. वो ऐसा तृष्णा का रूप है कि आप उस काम से आसक्त हो, You do it for Krishna, लेकिन आप उसे कृष्ण के लिए करते रहिए, and that will satisfy you उससे आप संतुष्ट हो जाएंगे and take away this desire. और ये इच्छा भी भौतिक रूप की चली जाएगी. So that's the point what Srila Prabhupada says many times. श्री प्रभुपाद जी इस पॉइंट को कई बार जोर देके बताए हैं. You should organize your day 24 hours a day in such a way आपको अपने दिन के 24 घंटे हैं वो इस तरह व्यवस्थित करना है so that during 24 hours you cannot do anything else than think of Krishna. ताकि 24 घंटे में आप और कुछ न कर पाएं, कृष्ण का चिंतन, कृष्ण की सेवा छोड़ के. So you do your work for Krishna, तो आपका कार्य कीजिए आप कृष्ण के लिए. and you can have headphones, and while you take care of the plants you hear Prabhupada. आप हेडफोन लीजिए, सुनिए प्रभुपाद की वाणी को जब पौधों की देखभाल कर रहे हैं, And it's very nice. बहुत अच्छा है. Yeah. So organize your day in such a time, in such a way that you concentrate on Krishna through your work, through your hearing. आपके दिन को इस तरह व्यवस्थित कीजिए कि आप कृष्ण की सर्विस को लगा पाएं और श्रवण कीर्तन के द्वारा अपने मन को मग्न कर पाएं. And sometimes you will deviate from it. कभी हो सकता है इससे विचलित हो जाएंगे. But then afterwards you will think, that's not good. उसके बाद लेकिन आपको लगेगा अरे ये तो अच्छा नहीं है ना, It doesn't give me satisfaction. ऐसा संतुष्टि नहीं मिल रही है मुझे जो मैं कर रहा हूँ. So that's what we have to learn. तो ये चीज हमको सीखनी है. Organize our time in such a way that we always think of Krishna. समय को इस तरह व्यवस्थित कीजिए कि हमेशा हम कृष्ण का चिंतन करते रहें. Indirectly or directly. प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष रूप से. If you go to the airport and you drive a car and you pick up your spiritual master, एयरपोर्ट जाएं आप या फिर कार ड्राइव कर रहे हैं, अपने गुरुदेव को लेने के लिए गए हैं, and then you drive your spiritual master to the temple with the car. फिर गुरुदेव को मंदिर की तरफ लेके आते हैं कार से. While driving, yes, you have to do so many things and take attention of the traffic. जब आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपको बहुत ध्यान देना पड़ा सारी चीज़ों का, ट्रैफिक को भी ध्यान देना पड़ेगा. But do you forget that your spiritual master is in the back of the car? लेकिन आप भूल जाते हैं उस समय क्या कि गुरुदेव बैठे हैं पीछे कार में. No. नहीं बोलते हैं ना. So in that same way, we are performing our work for Krishna. तो उसी प्रकार से हम कृष्ण के लिए अपनी सेवाओं को करते हैं. And while performing our work, sometimes we forget Krishna, but still the results is for Krishna. और जब हम काम करते हैं वो समय थोड़ी देर कृष्ण को भूल जाते हैं काम करते करते, लेकिन निश्चित रूप से जो परिणाम है तो कृष्ण के लिए ही है. And that will purify us. तो वो भी बहुत शुद्ध कर देगा. Okay, it's time 2:30. 2:30 हो गया है. I hope this was helpful. Thank you very much. आपको इस सदर से बहुत बहुत धन्यवाद. Srila Prabhupada ki.